साइंस एंड टेक के अंदर एसेंशियली क्वेश्चंस करंट अफेयर से ही आते हैं, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन है इन साइंस एंड टेक दैट इज दिस कि साइंस एंड टेक में ना जो वो क्रोनोलॉजिकली आपके रीसेंट मंथ्स के करंट अफेयर्स होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे हमेशा। तो आपने आगे चलते हुए भी जो आपके वीकली करंट अफेयर डॉक्यूमेंट में अभी सपोज अप्रैल के मंथ के तो हमें चाहिए ही होंगे एटलीस्ट, ठीक है, तो वो वाले डॉक्यूमेंट भी आपने साथ में इसके ऐड ऑन कर लेने। ऑल्दो हमारी क्लासेस में अभी हमने जो कवर किया दैट इज अप टिल मार्च, ठीक है, सो मार्च से पीछे की तरफ जाना है एंड दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपने याद रखने की सीक्वेंस प्रेफरेंस भी इसी तरह से वर्कआउट करनी है, ठीक है। तो चलिए डॉक्यूमेंट के ऊपर चलते हैं और उतना उतना ही याद रखना जितना मैं करा रहा हूँ, डोंट ट्राई टू मार्क अप एवरीथिंग। अभी हमें ज्यादातर ना साइंस एंड टेक के जो क्वेश्चंस आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर वो फैक्ट बेस्ड होते हैं कि व्हाट इज दिस, उसके ऊपर ज्यादा है। और इन केस उसमें कोई सजेशंस हैं, कोई इश्यूज हैं, सिग्निफिकेंस है एक्सेट्रा, उस पे क्वेश्चंस कम आते हैं कंपैरेटिवली। सो बी वेरी फोकस्ड इन व्हाट यू आर ट्राइंग टू ग्रैब फॉर योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। ओके, so these are now the current affairs from June to August end. Fine. So facial recognition technology. So this was the news. Let's see for what. So RTI responses received by the Internet Freedom Foundation, New Delhi. So this is a New Delhi-based digital rights organization. Reveals that Delhi police treats matches of above 80% similarly generated by its facial recognition technology system as positive results. Essentially, जब किसी को ट्रैक करना होता है तो 80% positive result means that good enough, that is the suspect or that's the person that you were looking for, ठीक है। तो लेकिन if it is below 80% then it's a false positive results and which require additional corroborative evidence। अगर 80% से कम सिमिलैरिटी हो, अब जैसे अमृतपाल को ढूंढ रहे हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी वहां पे भी यूज होती है, कैमरास के अंदर कहीं ना कहीं पिक्चर्स आते हैं। तो 80% अबव हो तो मान लेते हैं कि ठीक है, दिस इज द पर्सन दैट वी आर लुकिंग फॉर। इफ द सिमिलैरिटी इज लेस देन दे नीड एडिशनल एविडेंस। अब इसमें जो टेक्निकल काम है ना, ये वाला प्रीलिम्स में पूछने के लिए ज्यादा वो इच्छुक रहेंगे। So they are matching photographs and videos against photographs collected under Section 3 and 4 of Identification of Prisoners Act 1920 and which has now been replaced by the Criminal Procedure Identification Act 2022. ये जो डेरा सच्चा सौदा के जो चीफ थे राम रहीम, तो उनके खिलाफ ऐसा कहा जा रहा था कि उनका कोई डुप्लीकेट जेल में है और एक्चुअल बाबा जो है वो बाहर है, तो उनके फिंगरप्रिंट्स वगैरह मैच नहीं कर रहे, ऐसा करके कुछ एक न्यूज फैलाई थी। उसके बेसिस पे उन्होंने ये एविडेंसेस दिए कि देयर इज 80% सो वी कंसीडर इट पॉजिटिव। और किस एक्ट के अधीन ये सारी आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, तो दैट इज क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022। अब इस एक्ट के अंदर बायोमेट्रिक्स जो है वो इंक्लूड किए गए थे, तो दैट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव पॉइंट फ्रॉम द आइडेंटिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट आर द कंसर्न्स, ये सारी मीन्स का मामला है, आपने बस प्रीलिम्स में इतना ही याद रखना है एक्ट कौन सा है और फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी में पुलिस जो है वो किसको मानती है। 80% प्लस होगा तो इट्स फाइन, 80% से कम होगा तो फॉल्स पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। उसमें फिर एडिशनल एविडेंस और आएगा तो उसको फिर माना जाएगा कि यस इट इज देयर और नॉट, राइट। So as far as the Criminal Procedure Identification Act is concerned, it is feared that this will lead to over broad collection of personal data in violation of internationally recognized best practices। तो बेसिकली जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनका डेटाबेस बनाया जा रहा है, तो उन डेटाबेस के बेसिस पे उनकी पहचान आगे भी की जा सकती है। दिस इज अ रिक्वायरमेंट नाउ डे टू डे, जैसे जैसे डिजिटाइजेशन आएगा टेक्नोलॉजी का, वो हर जगह इन्फिल्ट्रेट तो होना ही। ओके, India's first indigenously developed HFC bus, that is hydrogen fuel cell bus। जर्मनी ने ट्रेन बनाई है हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे, हम अभी बस बना रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस तो है ही ना टेक्नोलॉजी का। सो bisphenol A pilot plant in CSIR, that's National Chemical Laboratory, an important feedstock for the preparation of epoxy resin, polycarbonate and engineering plastics, was also inaugurated।
तो बिस्फेनोल ए का एक नया प्लांट बना है, प्लस एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बस बनी है। ये दो चीजें न्यूज में थी। अब ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स क्या होते हैं ये तो हमें पता है ऑलरेडी। सो हाइड्रोजन फ्यूल्स के अंदर सेल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनके अंदर आयन एक्सचेंज होता है, और वो आयन एक्सचेंज के प्रोसेस के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। वो इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस होगी तो दैट्स बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर और टू ड्राइव द मोटर ऑफ द व्हीकल, एंड द नेट रिजल्ट इज वाटर। Okay. So now you have certain advantages. Basically, there are no tailpipe emissions. It only emits water vapor and warm air, more efficient than internal combustion engines. And hydrogen can be refilled in fuel cell vehicles in a matter of minutes. So that way, uh, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो है ईवी सेगमेंट से ये थोड़ा बेटर रहेगा, and it is using some fuel, so it's always more reliable because we have a basic notion or basic understanding कि ठीक है यार, हम गाड़ी में जैसे पेट्रोल डीजल भरवा के चल रहे हैं तो कुछ फ्यूल है गाड़ी में भी, है ना? Can move forward. Batteries, people, although we are at long with the batteries, we have comfort zone with the batteries also, but sometimes the dependability is troublesome because that segment is still under development phase. ओवरहीटिंग, कैचिंग ऑफ फायर, ये सब हमने देखे हैं बैटरी व्हीकल्स के अंदर। ओके, what are the key highlights of this innovation? So HFC bus has been developed by CSIR and KPIIT, an Indian multinational corporation. So the launch of India's first truly indigenous developed HFC bus is in tune with the National Hydrogen Energy Mission. तो हम धीरे धीरे ये चाहते हैं। अब प्रीलिम्स में क्वेश्चन क्या आएगा इस पे, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन क्या है? तो यूनियन बजट 2021-22 में इसको अनाउंस किया गया था। तो वी आर ट्राइंग टू यूज हाइड्रोजन एज एन एनर्जी सोर्स। बहुत देर पहले 2011 में इसके बारे में बात होनी शुरू हुई थी, 10-11 में, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल सेल व्हीकल। टोयोटा ने उस टाइम पे इसको सबसे पहले डेवलप किया था एज अ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, देन होंडा फॉलोड सूट, देन मेनी मोर कंपनीज केम इनटू बीइंग। इंडिया में तब से हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन में अब लाने की बात हो रही है। 2021-22, 10 साल बाद इसको इम्प्लीमेंटेशन में लाया गया। ओके, so what are we trying to do here? So we are trying to focus on generation of hydrogen from green power resources and link India's growing renewable energy capacity with hydrogen economy. These are the two focus points of the National Hydrogen Energy Mission. ये याद रखने हैं। The usage of hydrogen will not only help in India achieving its emission goals under the Paris Agreement, but also reduce the import dependency on the fossil fuels. So as far as it is concerned, energy mix is always a solution. ऐसा नहीं है कि fossil fuels बिल्कुल खत्म हो जाएंगे हमारे energy mix में से। Definitely हमारा import dependency थोड़ा कम हो सकता है। Renewable energy segment जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, so that will be a good thing for us. Why is this innovation significant? So what is the benefit of having a green hydrogen energy or something like that? So it enables deep decarbonization of difficult to abate emissions from heavy commercial transport sector, among others. So this is the biggest thing is this कि buses, trucks, इनसे सबसे ज़्यादा pollution होता है। तो ये एक aspect है। A single diesel bus plying on long distance route typically emits 100 tons of carbon dioxide annually, and there are over 1 million of buses in India. So that way, about 12 to 14% of CO2 emission and particulate emission comes from the diesel powered heavy commercial vehicles. So we can definitely cut down on this. Then ये ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ये सब हमने पहले काम कर लिया इसके ऊपर। तो ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली क्या होती है? तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लिटिंग वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन using an electrolyzer powered by renewable energy such as wind or solar. So that is green hydrogen बस। तो अभी हम यही कोशिश कर रहे हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया पॉलिसी के तहत इनको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से क्रिएट किया जाए। दैट इज द फर्स्ट ड्राफ्ट। ओके, then supercharged biotech rice. See, essentially the problem with the food today is it is losing on its nutrition value. This is the biggest trouble. So we are trying to have fortified rice, for example, by adding vitamin A, vitamin K, and so on to the rice, and that is one way of trying to add nutrition. But that is again an
unnatural way, because you're mostly mixing some chemicals or chemically created products, and their retention in the body is always questionable. Okay, so therefore, what you need is naturally nutrient rich food. That's what you need. But for production of that, what is happening is uh, soil that is becoming depleted in the micronutrients. And because year on year, if you are having commercial kind of cultivation on the same soil, that will definitely deplete the micronutrients in the soil. And when you put fertilizer upon the soil, for example, potassium, nitrogen, phosphorus, and so on, then these macronutrients capture the space of micronutrients in the soil. So because of that, there are going to be even less micronutrients, and the microorganisms which are responsible for replenishment of these micronutrients in the soil, like iron, like magnesium, like copper, like zinc, and so on, uh, these microorganisms also die out because of the higher amounts of NPK, etc., in the soil will make the soil acidic. And in that kind of acidic environment, it's very difficult for them to survive. So this is a situation that is coming along in agriculture, and that's when the food becomes a question mark in terms of nutrition value. Where else do you derive your nutrition from? So this is the situation in agriculture these days, and that's the situation we are trying to improve through biotechnology and various other means. Let's see. One of such efforts is supercharged biotech rice. So in the Chinese Academy of Agriculture Sciences, they have shown how a transcriptional regulator can boost the grain yield and shorten the growth duration of rice. So supercharged biotech rice yields 40% more grain. तो पहले हमारे पास जैसे हाई यील्डिंग वैरायटीज आती हैं, अब ये सुपरचार्ज्ड वैरायटीज आ रही हैं. क्या होगा इसके अंदर, देखिए. ओके. When a second copy of a single gene called as OSDREB1C is added to the rice, it improves the photosynthesis and nitrogen use, speeds up flowering, and absorbing nitrogen more efficiently, offering larger and more abundant grains. The researchers added that some native gene again, the same native gene again, and not the foreign one, like the BT or the BT soybean. And this is the method is best described as genetic modulation. So वो कर क्या रहे हैं कि अपने ही जीन की एक कॉपी बना के राइस में इंसर्ट कर रहे हैं. The report pointed out that giving a Chinese rice variety a second copy of one of its own genes has boosted the yield by 40%. अभी कौन सा जीन है जिसकी सेकंड कॉपी डाली गई है? OSDREB1C. क्वेश्चन में इतना सा पूछेंगे बस. और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जेनेटिक मॉड्यूलेशन rather than genetic editing. This is genetic modulation because it's the same gene which is being reinserted. इससे क्या होता है? Improves photosynthesis and nitrogen use. This is what we are doing by the genetic research. We're trying to understand what is the expression of each and every gene. So based upon understanding of that expression, ये particular gene क्या करता है एक particular cell के अंदर, तो हम उससे और ज्यादा काम लेने के लिए एक एक्स्ट्रा जीन उसी की तरह का लगा दिया. फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी में एक टर्बो चार्जर था, अभी 2 लगा दिए तो ज्यादा पावर देगा, है ना? तो वैसे ही है, एक इंजन था 2 लगा दिए तो ज्यादा पावर देगा. सो दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व. ओके, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट? तो इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस प्रेजेंटली. तो प्रीलिम में एक तो ये अपने आप में क्वेश्चन है, ठीक है. And Vietnam was the second largest producer of rice this time. So it exported about 18.75 million metric tons to over 150 countries during 2021-22. And with the growing demand, strategies should be found to increase the production of and export of rice. If you are going to be world's largest producer and exporter of rice, so then definitely at the same point of time you should try to maintain that, because higher revenues are always good to export se aayenge. It has excellent rice research located in Andhra Pradesh, Karnataka, Punjab, and Haryana, and we can do that. So definitely हम भी Chinese वाले को copy paste हम भी कर सकते हैं, क्योंकि research तो आई गई है हमारे पास, ठीक है. तो prelims में इसका क्वेश्चन ऐसे बनेगा: OSDREB1C has been recently in news. What is this? ठीक है. So this is basically a gene within the rice or Chinese rice,
and this will help in improving photosynthesis and nitrogen use and thereby boosting up yield. बस इतना टेंशन लेना है, इससे ज्यादा टेंशन प्रीलिम्स में नहीं लेना. ठीक है. फिर दूसरा फैक्ट, इंडिया बीइंग द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस. ये वाले क्वेश्चन तो कई बार पूछ चुके हैं. टोमेटो फ्लू, मतलब और कुछ नहीं बचा था तो ये आ. So this is named as tomato flu. Why? So because of the red painful blisters that will appear on the patient's body and gradually enlarge to a size of a tomato. That's why tomato flu. It is caused by Coxsackie virus A16. Okay, and this is the enterovirus family, and this is an RNA virus, and humans are the only host for the enteroviruses. Okay, the infectious disease is caused by intestinal virus and is rare in adults as they usually have immune systems for that strong enough to defend them from the virus. तो बच्चों में ज्यादा प्रॉब्लम आती है टोमेटो फ्लू की, तो उसके केसेस अभी आ रहे थे. बस इतना ही. तो इसमें ये कॉक्सैकी वायरस A16, टोमेटो फ्लू, बस दैट्स इट. दीज आर द टू थिंग्स यू नीड टू वर्क ऑन. ठीक है. केरला में ये सारी बीमारियां पहले आती हैं, जो भी जापानीज एंसेफेलाइटिस, ये सब, क्योंकि गरीबी है अल्टीमेटली. चाहे पढ़े लिखे लोग बहुत हैं पर फिर भी ट्रबल तो है. फॉरएवर केमिकल्स. तो फॉरएवर केमिकल्स बेसिकली उनको बोलते हैं जो नेचर में अपने आप से डिटीरियरेट ना हो. ठीक है. तो they are found many places across the globe and they are contaminated with per and polyfluoroalkyl substances, PFAs both. Okay. Because they have a tendency to stick around in the atmosphere, rainwater and soil for a long period of time, and they are also listed in the Stockholm Convention. So these are perfluoroalkyl substances. दो तरह से क्वेश्चन बनता है, which of the following can be included in forever chemicals. तो वहां पे आपने PFAs ये नाम याद रखना है, पर एंड पॉलीफ्लोरोअल्काइल सब्सटेंसेस. ठीक है. और इसमें कोई टेंशन लेने वाली कोई खास बात तो है नहीं. इनको खत्म कैसे कर सकते हो आप? इंसिनरेशन से कर सकते हो, सुपर क्रिटिकल वाटर ऑक्सीडेशन, प्लाज्मा रिएक्टर, फिल्ट्रेशन. दीज आर सम वेज टू गेट रिड ऑफ देम, but these are extreme ways and they are costly ways. Then dust formation in nova ejecta. So scientists from the SN Bose Center for Basic Sciences observed that imploding nova called as nova V1280 Scorpii and found that a thick dust formed around it after a month and lasted for about 250 days. So what is a nova? So nova is an astronomical unit or astronomical event in which a strong explosion occurs temporarily on the stellar surface, increasing the brightness by hundreds millions of times, then slowly darkening over the weeks or months. So it occurs in a binary system, दो stars इकट्ठे हों जहाँ पे, consisting of a white dwarf and a main sequence star. So this is it. Supernova आपने बहुत बार सुना है. This is a nova. Fine. So prelims में इसके बारे में याद रखना है. So life cycle of a star. ये ज्योग्राफी में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है. So there is a stellar nebula. From stellar nebula, two kinds of stars can be formed. One with a weight which is equivalent to that of a sun or less than that of a sun. Okay, less than or equal to sun. One with a weight greater than sun. Okay, so two kinds. So जो तो sun से ज्यादा उसको बोलेंगे massive star, otherwise average star. एवरेज स्टार पहले जब डिमाइस की तरफ जाएगा रेड जायंट बनाएगा, रेड जायंट के बाद प्लैनेटरी नेबुला एंड देन व्हाइट ड्वार्फ. दिस इज द लास्ट फेज. मैसिव स्टार विल बिकम अ रेड सुपर जायंट and then have a supernova explosion, and then it can have two things: either it will become a black hole or become a neutron star. So two possibilities are there for a massive star. Okay, ये प्रीलिम्स के लिए याद रखना है. इस सीक्वेंस के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आया हुआ है ऑलरेडी. ठीक है, चलिए. A binary star system occurs when two stars both orbit around a common center mass. The brightest star is officially classified as the primary one, और दूसरा secondary हो जाएगा automatically. White dwarfs are the stars that have burned up all the hydrogen that once used to be its main nuclear fluid, और अभी सिर्फ उसमें helium बचा है. Such stars have very high density
and a typical white dwarf is half the size of our sun and has a surface gravity of 1 lakh times that of the Earth. So whatever your weight is here on Earth, your weight on that white dwarf will be 1 lakh times more. Okay. What is cosmic dust? So this is basically tiny particles of solid material floating around the space between the stars. So that is cosmic dust. ठीक है. अभी इसकी फाइंडिंग्स क्या है, क्या फर्क पड़ता है उससे, ये आपको नहीं चाहिए. आपको सिर्फ ये लाइफ साइकिल ऑफ स्टार चाहिए. आपको नोवा पता होना चाहिए कि है क्या. दैट्स दैट. अब उस डस्ट फॉर्मेशन के बेसिस पे आगे साइंटिस्ट ने क्या रिसर्च और स्टडी किया, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना. Then come forward. India's first commercial SSA observation, that is Space Situational Awareness Observatory. So this has been set up in Garhwal region of Uttarakhand. And there is a company called as Digantra or Dijantra. This is a Bengaluru-based space sector startup. इन्होंने शुरू किया है. And this is it. Prelims में इससे ज़्यादा इसके ऊपर नहीं चाहिए. स्पेस ऑब्जर्वेटरी क्या करने की कोशिश करेगा कि स्पेस डेब्री और मिलिट्री सैटेलाइट्स hovering over the region उनके मॉनिटर करेगा. तो इससे क्या होता है कि हमारे को अपनी सैटेलाइट्स आगे पीछे कहाँ करनी है कि स्पेस डेब्री से बच जाए. तो दैट इज द कंसर्न इन विच इट विल हेल्प. स्पेस डेब्री आती कहाँ से? स्पेंट रॉकेट स्टेजेस, डेड सैटेलाइट्स, फ्रैगमेंट्स ऑफ स्पेस ऑब्जेक्ट्स, कुछ टूट फूट के आ जाता है कहीं पे भी. एंड उनकी स्पीड देखिए, इट्स 27,000 किलोमीटर पर आवर इन लो अर्थ ऑर्बिट. दिस इज अ वेरी रियल थ्रेट, वेरी लीथल टू द सैटेलाइट्स. इतनी स्पीड पे अगर छोटा सा चंक भी उसको लगेगा तो सैटेलाइट पूरा खत्म हो जाएगा. सो दिस इज द कंसर्न. ओके. सो व्हाट इज द करंट सिचुएशन? सो एज फार एज द स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस इज कंसर्न्ड, वी आर जस्ट ट्राइंग टू ट्रैक द ऑब्जेक्ट्स इन द स्पेस एंड प्रेडिक्ट कि कहाँ जाके हिट करेंगे या कहाँ से निकलेंगे इन अ गिवन टाइम. इंडिया में एट प्रेजेंट इंडिया यूजेस मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रेडार एट श्रीहरिकोटा रेंज इन आंध्र प्रदेश, बट दिस हैज अ लिमिटेड रेंज. इसीलिए हमें और यहाँ पे स्टार्टअप्स बनने के चांस हैं. सो एसएसए इंडिया डिपेंड्स अपॉन द NORAD, दैट इज नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड. तो वो भी सरकारी कंपनी है और टाइम टू टाइम इनपुट्स देता रहता है. नोडल एजेंसी स्पेस डेब्री और स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए इंडिया में कौन सी है? इसरो. बस दैट्स इट. इसके साथ जुड़ा हुआ हमारा एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट नेत्रा. So this will be the early warning system in space to detect space debris and other hazards of the Indian satellites. So that is Project Netra. इसके साथ एक और जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है क्लियर स्पेस 1, जिसमें हम वी वांट टू एलिमिनेट द स्पेस डेब्रीज इन द ऑर्बिट एंड दिस इज सेट टू लॉन्च इन 2025. So this is all related to space debris. It always remains in news for one or the other bad reasons. तो ये पता होना चाहिए. प्रोजेक्ट नेत्रा इंडियन प्रोजेक्ट है, क्लियर स्पेस 1 यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है. ओके. बाकी सब सिग्निफिकेंस वगैरह मीन्स के लिए है. इंडियाज बैटरी स्टोरेज पोटेंशियल. So Niti Aayog has released a report called Advanced Chemistry Cell Battery Reuse and Recycling Market in India. बस रिपोर्ट और किसने दिया और उसका नाम ऑर्गेनाइजेशन का और रिपोर्ट का नाम, ये दो याद रखने हैं पहले तो. And what has it state? That India's battery demand will increase significantly by 2030. Okay. So presently, our potential is 600 gigawatt hour by 2030. This is the kind of potential we are working with. And in the battery segment, there is a compound annual growth rate of 25%. So any new companies that will be coming in the battery segment, definitely they'll have growth. ज़्यादातर हमारी रिलायबिलिटी जो रही है इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज के लिए वो लेड एसिड बैटरीज के ऊपर रही है अभी तक. अब हम थोड़ा थोड़ा उधर भी लिथियम आयन बैटरीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं बिकॉज उनका लाइफ साइकिल बेटर होता है, जल्दी चार्ज होती हैं और चार्ज डिस्चार्ज उनका बहुत एफिशिएंट है इस वजह से. और ईवी सेगमेंट में हर जगह पे बेनिफिशियल होगा और लिथियम रिसोर्सेस हमने JNK में अभी नया डिस्कवर किया ही. देन जियोथर्मल पावर इन लद्दाख. So State Run Explorer ONGC will be participating to generate electricity through geothermal at Pugga. Pugga Valley in Ladakh is known for this, off the road to Chumar on de facto border with China. Okay. So Pugga Valley के अंदर ना जो
वॉल्केनिक चेम्बर से सुपर हीटेड स्टीम आती है और उसकी वजह से देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू क्रिएट अ जियोथर्मल पावर इन लद्दाख. You see, as per Geological Survey of India, there are 340 geothermal hot springs in the country, and they have a low surface temperature range of 370 to 900 degrees Celsius, and which is suitable for direct heat application. So the potential is about 10,000 megawatts geothermal energy के लिए इंडिया में. कहाँ पे हैं hot springs? तो हिमालयन, सहारा वैली, कैम्बे बेसिन, सैन, नर्मदा, देन वेस्ट कोस्ट, गोदावरी बेसिन, महानदी बेसिन, यहाँ पे जनरली हमारे पास हॉट स्प्रिंग्स हैं. दिस इज द जियोथर्मल मैप ऑफ इंडिया, कहाँ पे पॉसिबिलिटी है. ओके, अब इसमें से एक क्वेश्चन बनता है, सम ऑफ द प्रोमिनेंट प्लेसेस वेयर अ पावर प्लांट कैन बी एस्टैब्लिश्ड बेस्ड ऑन जियोथर्मल एनर्जी. तो जिसके लिए ऑलरेडी हमारे पास वर्कड आउट है, तो ये वाले प्लेसेस का नाम याद रखना. उग्गा वैली लद्दाख तो हो ही गया, फिर मणिकरण हिमाचल प्रदेश, जलगांव महाराष्ट्र, तपोवन उत्तराखंड, बकरेश्वर वेस्ट बंगाल एंड तुवा इन गुजरात. ये प्लेसेस याद रखने, दे आर नोन फॉर जियोथर्मल एनर्जी. देन स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन. तो 2017 से ये हैकाथॉन इनिशिएटिव्स चल रहे हैं. कोशिश क्या किया जाता है, इट इज कॉल्ड एथिकल हैकिंग. So through which we come to know any kind of loopholes in a particular software or a web page or any kind of website, and then those loopholes can be corrected. This is one. अभी इसके अंदर हार्डवेयर एडिशन भी है सॉफ्टवेयर के अलावा. तो हार्डवेयर के अंदर भी जो लाइनेक्स कर्नल्स हैं वो किस तरह से आपस में इंटरेक्ट करेंगे, क्या उनकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए टू डिलीवर अ सर्टेन सर्विस, और क्या उसमें इम्प्रूवमेंट्स किया जा सकता है सिक्योरिटी फीचर्स के अंदर. तो जो उनका जो जिसको बोलते हैं फर्मवेयर, उसको कैसे अपग्रेड कर सकते हैं फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, इन सब चीज़ों के ऊपर इसमें काम होता है. लेकिन इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आना थोड़ा मुश्किल है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ऊपर. जस्ट यू शुड नो एंड देन जस्ट लीव इट. विंड प्रोजेक्ट्स इन इंडिया. So the Global Wind Energy Council and MEC Intelligence, MEC Plus, a consulting firm that specializes in renewable energy, has reported that annual installation of new wind power projects in India will peak by 2024 and likely to decline thereafter. So after 2024, fresh products are likely to be wind solar hybrids. क्योंकि देखो विंड प्रोजेक्ट्स में या विंड एनर्जी के अंदर मेजर इश्यूज हैं दो. पहला इशू है कॉस्ट का और दूसरा इशू है मेंटेनेंस का. ये दो इश्यूज हैं. स्टार्टअप कॉस्ट बहुत ज्यादा है और फिर उसको मेंटेन बहुत करना पड़ता है जो विंड मिल्स होते हैं. इस वजह से वी आर नाउ स्विचिंग टू आइदर सोलर प्रोजेक्ट्स और विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स. वी आर नॉट लुकिंग फॉर सिंपल काइंड ऑफ विंड प्रोजेक्ट्स. अब जितने टेंडर पहले दिए जा चुके हैं वो तो चल रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, और वो भी ऑफशोर विंड ज्यादा है, ऑनशोर कम. तो ऑनशोर विंड फार्म्स में प्रॉब्लम होती है लैंड की, कहाँ से मिलेगा. और ऑफशोर विंड फार्म्स में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, वो तो समुद्र में लग जाएगा, वाटर बॉडी में आमतौर पे लगता है. स्टेटस क्या है अभी? सो देर आर ओनली 13.4 गीगावाट ऑफ प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्ट्स इन विंड एनर्जी, और ये 2024 तक खत्म हो जाएंगे. तो प्रेजेंटली वी आर एक्सपेक्टेड टू ऐड 3.2 गीगावाट इन 2022, एंड टोटल कैपेसिटी हमारी जो है तब तक करीब 13 गीगावाट तक पहुंचेगी बस. सो मेन रीजन्स कंसंट्रेशन के कहाँ पे है? गुजरात और तमिलनाडु, बस इधर ही है दो जगह पे विंड मिल्स ज्यादा है. बस इसमें टोटल पोटेंशियल देखिए, तो इंडिया हैज अ पोटेंशियल ऑफ 60 गीगावाट ऑफ विंड, बट सोलर में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, पैसा कम लगता है, तो बेटर है कि सोलर की तरफ चलेंगे. तो इसीलिए हम ज्यादा सोलर की तरफ जा रहे हैं आजकल. ठीक है, ओके. अब इसमें हमारे ऑलरेडी क्या क्या चल रहा है देखिए. नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी ये 2018 में आ गया था. तो इन्होंने इसी के ऊपर बात करना शुरू किया कि वी विल ऑलवेज हैव विंड सोलर हाइब्रिड काइंड ऑफ वर्कआउट. देन देयर इज ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी, ये 2015 का पॉलिसी है. So with an objective to develop offshore wind energy in the India's exclusive economic zone. इसमें ज्यादा एस्पेक्ट है टेरिटोरियल सिक्योरिटी का, कि अगर हमारा कोई ना कोई एसेट वहां पे होगा तो उसको ठीक करने लोग जाते रहेंगे, देखते रहेंगे, तुम्हारा मालिकाना हक भी बनेगा.
उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, क्योंकि अदरवाइज ना चाइनीज वेसल्स यहाँ पे आती हैं पॉलीमेटालिक नॉड्यूल्स की एक्सट्रैक्शन के लिए। अगर तुम्हारे वहाँ पे कोई रिसोर्सेस होंगे तो तुम्हारे लिए स्ट्रेटेजिकली सिक्योरिटी वाइज वो थोड़ा बेटर रहता है। पर इसलिए हम यहाँ पे ये ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं, अदरवाइज हमारा ज्यादातर जो इंटरेस्ट है वो सोलर में। नेक्स्ट, लॉन्च ऑफ आर्टेमिस 1 मिशन। ये हमने पहले भी देख लिया था, मून मिशन के लिए है आर्टेमिस 1। तो अभी उसके लिए टेस्टिंग चल रहा है, अनक्रूड मिशन चलेगा। So this is something that we have covered yesterday also. Moving, 10 plus strategy against non-communicable diseases. So what is this? Let's see. It is a regional strategy to address the non-communicable diseases at first level referral health facilities. It is aimed at bridging the access gap in treatment and care of the patients with chronic and severe non-communicable diseases. Urges the countries to put in place standardized programs to tackle chronic and serious non-communicable diseases by ensuring essential medicines, technologies, diagnostics are available and accessible at district hospitals. कुल मिला के diabetes, blood pressure, any kind of such lifestyle kind of diseases, non-communicable, तो इनके लिए मेडिसिन, टेक्नोलॉजी और डायग्नोस्टिक्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स के ऊपर अवेलेबल होने चाहिए। ये करने की कोशिश करें। दिस इज द 10+ स्ट्रेटजी। बस ठीक है। आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन पता है किस तरह से आएगा? 10+ स्ट्रेटजी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज फॉर विच पर्पस? तो इट इज फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा यूपीएससी में जब आएगा तो इससे ज्यादा भी टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। ठीक है, फाइन। अब ये बाकी का मामला मेंस के लिए कि भाई इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की क्या स्थिति है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। ओके, न्यू जीन टू प्रिवेंट फंगल इन्फेक्शन। Now I should tell you, in today's newspaper, in Indian Express, it has been talked about in USA there is a spread of a particular type of fungal infection that is going on, and which is very serious, uh, especially for those who are either on ventilator or they're having some kind of blood transfusion, some kind of cathera they are using. So इन लोगों को बहुत ज्यादा ये फंगल इन्फेक्शंस हो रही हैं और ये क्यूरेबल नहीं है किसी भी मेडिसिन से, and they are resulting into deaths also. So in USA this is a major trouble right now which is going on. So therefore you need to have more research to deal with fungal infections. Okay, so now researchers have identified a gene called CSA6 which should hold a key to prevent fungal infection, candidiasis. So that often affects the intensive care unit patients, cancer patients, and patients receiving immunosuppressive therapy. What is this Candida albicans? So Candida albicans is a fungal species infamous for causing high rates of morbidity, and basically जिनका इम्यूनिटी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है एड्स की वजह से या किसी भी ट्रीटमेंट जो मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं उसकी वजह से उनको ज्यादा अटैक करते हैं। It resides in the mucosal linings of the gastrointestinal and urogenital tracts of the healthy individual, and it turns into pathogen under immunocompromised conditions. तो हमारे अंदर ही है कहीं ना कहीं, तो उसकी वजह से ट्रबल्स आते हैं आगे। See, fungus is such a thing. हमारे पास penicillin we have derived, where is penicillin derived from? And penicillin is basically an antibiotic. Where have we derived penicillin from? बताइए, या फिर मैं याद बताता हूँ आपको। So there is a genus of fungi that is penicillium. तो यहाँ से penicillin extract होता है, ठीक है। And once it is done, 1928 में था, so one of the first and still one of the most widely used antibiotic agents derived from penicillium mold, 1928 Scottish bacteriologist Alexander Fleming. So he drove this. So फंगस अच्छा भी है और फंगस बुरा भी है, बोथ वेज है। हमारे लिए ये कंटिन्यूअस हमारी लाइफ का पार्ट एंड पार्सल रहता है हर फॉर्म के अंदर, ठीक है। कंट्रोल में रखना जरूरी है। So right now this is a collaborative study between the Jwala Nehru Center for Advanced Scientific Research, Bangalore, and Institut Pasteur, Paris, France. So they are trying to understand how to deal with this fungus.
बहुत ज्यादा टेंशन बस इतनी की लेनी, इससे ऊपर नहीं जाना. CSA6 gene is known for what? So it is known to prevent fungal infections. What is Candida albicans? It is a fungus. It lives in the gastrointestinal or urogenital tract of healthy person. Once you get immunocompromised, it becomes pathogenic. It can then hurt you. Okay, that's this. Then paddy dwarfing. So a mysterious disease has hit the paddy crop, caused dwarfing of the plants in Punjab and Haryana. Dwarfing मतलब छोटा रह जाना कद में, होना. So scientists have decoded the mystery, blaming it upon the southern rice black streak dwarf virus. Okay, named after the southern China, where it was first reported in 2001. So basically, the plant becomes stunted, and the appearance of white chlorotic specks on the foliage. तो हरे रंग के पत्ते के ऊपर सफेद सफेद धारियां बननी शुरू हो जाती हैं. तो that's the indication for this virus. Okay, बस इतना ही, ज्यादा टेक्निकल स्ट्रीमिंग नहीं करनी, इतना ही करना है. ठीक है. Then OTEC plants in Lakshadweep. OTEC basically means Ocean Thermal Energy Conversion. तो अभी पहला इसका जो प्लांट है 65 किलोवाट, सो दैट इज इन कवरत्ती लक्षद्वीप. बहुत देर से ओटेक के ऊपर रिसर्च चल रही है, तो खैर अभी लक्षद्वीप में स्टैब्लिश्ड है. The plant will power 1 lakh liter per day low temperature thermal desalination plant which converts sea water into potable water. ये हमने इजराइल से टेक्नोलॉजी बोरो किया था. The plant is the first of its kind in the world as it will generate drinking water from seawater using indigenous technology, green energy and environmentally friendly process. So OTEC plant will power the water plant and then you'll have good water to drink. What is OTEC? So this is a process of producing energy by harnessing the temperature difference, that is the thermal gradient between the ocean's surface temperature and deep ocean temperature. सरफेस पे जैसे हमने पता है कि 25 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर होता है, और डीप जैसे जाते जाएंगे तो वैसे ठंडा होता जाएगा पानी. तो उन दोनों के बीच का जो टेम्परेचर गैप है उसको एक्सप्लॉइट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है. ठीक है. ओशंस हैव अ ह्यूज हीट रिजर्वोयर. पानी जल्दी हीट एब्जॉर्ब करता है और धीरे धीरे रिलीज करता है. इट्स लाइक दिस. Now there are two types of OTEC technologies, closed cycle and open cycle method. तो क्लोज साइकिल के अंदर जो वर्किंग फ्लूइड है दैट इज अमोनिया व्हिच इज पम्प्ड थ्रू द हीट एक्सचेंजर फॉर इवेपोरेशन एंड देन steams run a turbine. And open cycle where the warm surface water is pressurized in the vacuum chamber, converted into steam, runs the turbine, and the steam is then condensed using cold ocean water to form from the lower depth. इस तरह से स्टीम एक बार इंट्रोड्यूस करते हैं, कभी कंडेंस होती है, कभी एक्सपैंड होती है, वो चलती रहती है. एक अगर +2 में फिजिक्स पढ़ी है तो थर्मोडायनामिक्स के अंदर आता है कार्नोट साइकिल. ना नहीं भी सुना है तो बस इसको याद रखना. बस ओटेक के लिए जो मेन चीज चलती है दैट्स कॉल्ड कार्नोट साइकिल. उसके बेसिस पे ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन होता है. इस तरह से बस पाइप्स हैं. तो ओशन में डेप्थ के साथ साथ जैसे जैसे टेम्परेचर वेरी होगा तो उस टेम्परेचर वेरिएशन को एक्सप्लॉइट करके वो जो वर्किंग फ्लूइड होता है जैसे अमोनिया, लिक्विड अमोनिया डाल देते हैं तो वो चलता रहता है. एक बार आपने डालना है, जैसे वो नीचे जाएगा कंप्रेस हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, फिर ऊपर आएगा तो वो धीरे धीरे सर्कुलेट करते रहेंगे, उसको एक्सपैंड करेगा, इधर एक टर्बाइन लगा देंगे, उसको रोटेट करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा. दैट्स इट. ठीक है. सो व्हाट इज ओटेक? व्हाट इज द वर्किंग फ्लूइड यूज्ड इन ओटेक? लिक्विड अमोनिया. ठीक है. And where is India's first OTEC plant established right now? It is in Kavaratti, Lakshadweep, and this will also help in producing potable drinking water from seawater. बस इतना. इंडिया का ओटेक पोटेंशियल कितना है? बहुत है. 1,80,000 मेगावाट का है. ठीक है. तो क्योंकि हमारे पास कोस्ट लाइन बहुत जबरदस्त है, लेकिन ये ओटेक टेक्नोलॉजी अभी काफी टाइम लगेगा बिल्ड होने में. हमने इतनी ज्यादा नहीं बना रखी है. National Institute of Ocean Technology. So this was established in 1993 under Ministry of Earth Sciences.
and this is now trying to create Otech technology and all that. Okay. Soil mapping. The Food and Agriculture Organization started a project to digitally map soil nutrients in sub-Saharan Africa and Central America to increase the efficiency in using fertilizers. So we are trying to just understand what kind of soil is where. Accordingly, you can have fertilizers added to them. So it is delineating the natural bodies of soil, classifying and grouping the delimited soil into map units. So you know the properties, and accordingly you can add or not add the fertilizer. तो बस इतना ही जो याद रखने वाला है. कहाँ पे हो रहा है? Sub-Saharan Africa and America. What is FAO? So FAO is basically a specialized agency of UN and leads international efforts to defeat hunger. Goal is to achieve food security, जो SDG 1 में भी आया है, no poverty. उसके बाद है no hunger, SDG 2 उसके ऊपर काम करता है. Regular access to high quality food and lead active healthy lives. So that's it, same for the people. With 195 members, 194 countries and European Union, FAO works in over 130 countries worldwide. So FAO के अधीन ही International Year of Millets भी चल रहा है अभी. Okay. Grain shape and its liquefaction potential. So scientists have studied and highlighted the important effect of the shape of sand grain on the liquefaction potential of granular soils. Liquefaction of sand is a phenomenon in which the strength and stiffness of the soil is reduced by the earthquakes, shaking, or other rapid loading, and leads to collapse of the structures resting on the liquefied ground. दलदल नहीं बन जाता मिट्टी में जैसे वैसे मिट्टी लूज हो जाती है. एक पकड़ जो उसकी आपस में बनी हुई है, जो solid ground था, it becomes like a liquid ground. Now although it is in solid form, but it is moving like liquid, fluidic. So that is liquefaction of sand. ये prelims में याद रखना, earthquakes के साथ इसका major concern है. Liquefaction potential of a sand is one of the major factors behind the collapse of structures during earthquakes. तो नीचे की मिट्टी जितनी liquefaction potential वाली होगी, उतना जल्दी earthquake में ऊपर का building collapse करेगा. A natural sand with a regular shape liquefies easily. The natural sand used in structures like slopes, retaining walls can be replaced with irregular manufactured sand to improve stability and sustainability. तो natural sand की बजाय manufactured sand use करना है. So why irregular green shape improves stability and sustainability? Irregular, अब एक simple सी बात है, कैसे properly spherical आप कुछ ले लीजिए और उसको एक कंटेनर में डालिए, उसके टू एंड फ्रो मूवमेंट बहुत आसान है क्योंकि फ्रिक्शन कम है. और अगर इस तरह के चंक्स ऑफ सॉइल होंगे जो आपस में इंटरलॉक्ड होंगे तो उनकी मूवमेंट करना तो बहुत ही मुश्किल है. So that is where we need irregular shape, and they are basically helpful in interlocking of the particles like we just saw. Deviation in the fluid path. So tortuosity or the deviation in the fluid path increases with the irregular shape of the particles. अब irregular shape of the particles में कोई ऐसे movement सीधे तौर पे होना भी बड़ा मुश्किल है. उसमें अगर particles की shape इस तरह से है तो उसमें movement भी कैसे होगी, थोड़ी इधर ये हिला, थोड़ा इधर ये हिला, तो ज्यादा वहीं पे रह जाएगा. सारे movement earth shaking होने के बावजूद भी वो movements आपस में एक दूसरे को adjust कर देंगे. Then small satellite launch vehicle हमने पहले कवर किया. इसरो ने डेवलप किया है अभी, and it's 3 stage and there are 3 solid propulsion stages and a liquid propulsion based velocity trimming module as a terminal stage, means the last stage. कभी भी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स होते हैं ना, आमतौर पे लास्ट स्टेज को लिक्विड रखने की कोशिश करते हैं क्योंकि लिक्विड में यू कैन प्रिसाइसली बर्न द फ्यूल एंड प्रिसाइसली प्लेस द थिंग्स इन ऑर्बिट. ठीक है, ये कोशिश होती है. तो पहले की स्टेज आप सारी सॉलिड रख सकते हो क्योंकि उसमें तो ब्लास्ट कर करके उसको वहां तक लेके जाना, बस उसका पर्पस इतना ही होता है. इसमें ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं होते हैं. देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड emissions. So in Rajya Sabha, on the question, Minister of State Communication
stated that there is no impact on environment due to electromagnetic field levels in India. So what are electromagnetic fields? So these are the combination of invisible electric and magnetic field forces. There are natural source of electromagnetic fields which are present everywhere in the environment but are invisible to human eye. हर चीज में से electromagnetic field निकलती है, कुछ भी phenomena हो रहा है आपके आसपास. So there are human made sources such as X-rays, जब scanning होती है, या electricity that comes out of the every power socket, उसकी एक electromagnetic field है. Various kinds of high frequency radio waves like TV antennas, radio stations, mobile phone based stations everywhere. So उनकी भी electromagnetic field अपनी अपनी है. आमतौर पे ऐसा माना जाता है कि इसकी वजह से देयर कैन बी सम सीरियस हेल्थ कंसर्न्स लाइक ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, मिसकैरेजेस, chronic fatigue, weak immune system, etc. So these are the impacts if you are in the high EMF exposure throughout your life, then this kind of problems are there. And there are definitely impacts on environments because it can impact you, it can impact the environment also, flora and fauna, both. Okay. What are the initiatives taken by the government to curb EMF emissions? So as per the government, EMF emissions of the mobile towers are non-ionizing radio frequencies having very minuscule power and are incapable to cause any adverse environmental impact. तो क्योंकि हम ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे, तो इस वजह से हम कुछ इनिशिएटिव्स भी नहीं लिए हुए कि ये ईएमएफ से कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, उसको ठीक करने के लिए. There is an international EMF project of the WHO which published an information sheet in 2005 जिसमें उन्होंने बनाया कि एक्सपोजर लिमिट्स इन दी नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन गाइडलाइंस. तो जो इनकी इंटरनेशनल लिमिट्स है ना जितनी, उससे करीब 25 गुना ज्यादा हमारी ऑलरेडी एक्सपोजर लिमिट्स हैं, ठीक है, हमारे डिवाइसेस के अंदर इधर उधर. तो इस वजह से जो हो रहा है बस इट इज बीइंग जनरली इग्नोर्ड. दैट इज द कंसर्न हियर. द फील्ड यूनिट of Department of Telecommunication regularly carries out the EMF audits of up to 10% of BTS sites, that is based transceiver stations जितने भी ये antennas लगे हुए हैं, annually on a random basis, and it imposes financial penalty on the ESPs, that is telecom service providers, if they are found to exceed the prescribed EMF emission limit. अब आपको पता ही है कि इंस्पेक्टर्स कैसे जाके इंस्पेक्शन करते हैं और कितना वो कंप्लाई करते हैं इन चीज़ों के साथ, और अगर हो भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो वो कैसे एडजस्ट होता है, यू नो ऑल दिस थिंग्स. तो इस वजह से बस इंडिया में चल रहा है, ठीक है. फाइन. इंडिया सोलर पावर ड्रीम. सो राइट नाउ Government of India has set the target to expand India's renewable energy installed capacity to 500 gigawatts by 2030, and this is an achievable thing. This will help deal with the Paris Agreement as well. What is the present scenario? Present scenario here means this is August 2022. Okay. So wind 40, solar 50, bio 10, small hydro 4.8 and large hydro 46 gigawatts. So renewable energy segment में हमारे पास ये installed capacity है फिलहाल. Present solar power capacity, so there are 45 solar parks, aggregate 37 gigawatts have been approved in India. ये धीरे धीरे बढ़ जाएगा. The world's largest energy park of 30 gigawatt capacity solar wind hybrid is already installed in Gujarat. Now it is operational. हो गया इसका startup by Modi ji. So other government initiatives, there is a production linked incentive scheme for support the manufacturing of your solar photovoltaic modules. Okay. Domestic content requirement. तो इसमें हमारा WTO में केस भी हो गया था एक बार डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट को लेके. ये होता है कि हम इंपोर्टेड नहीं लगाएंगे, कुछ एक मिनिमम डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट रखेंगे अगर आपने कोई भी प्रोग्राम चलाना है तो. Under the current scheme of Ministry of New and Renewable Energy, namely CPSU's scheme phase 2, Pradhan Mantri Kusum, that is Kisan Urja Sanrakshan Utthan Mahabhiyan. Okay. So here
and even grid connected rooftop solar program phase 2, the government subsidy is given. It has stated, it has been mandated to source solar PVs and cells and modules from domestic sources. तो अगर आपको सरकार से सब्सिडी चाहिए तो फिर जो डोमेस्टिक सोर्सेस इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं फोटोवोल्टिक सेल्स, तो वहीं से आप ये खरीदेंगे, ग्रिड सिस्टम्स खरीदेंगे। लेकिन हमारे की अभी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, इतना अच्छा नहीं है। Imposition of basic custom duties on import of solar PV cells and modules, ये बेसिकली इंपोर्ट को रोकने के लिए होता है। अभी बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो रहा था नहीं तो इंडिया में, we impose the 40% duty on import of modules and 25% on the import of cells. तो ये रोकने के लिए, we just don't want कि बेसिकली फ्रांस है फॉर एग्जांपल या चाइना है, ये दो मेजर मैन्युफैक्चरर्स हैं फॉर फोटोवोल्टिक सेल्स इन द वर्ल्ड। फ्रांस का अरीवा जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में भी है, तो वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इधर भी बनाता है। अब उनके पास इतनी ज्यादा बन के तैयार हो रखे हैं कि वो आपको अगले 20 साल तक सिर्फ बेच सकते हैं फोटोवोल्टिक सेल, और हम ये नहीं चाहते। अब वो बहुत सस्ते बेचते हैं और उनके बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी के भी हैं, दे हैव अ गुड एफिशिएंसी आल्सो, बट द प्रॉब्लम इज इफ वी नाउ import, definitely we'll get good deals, but our technology will not evolve. We will be only import dependent then. The number of jobs that could be created in the manufacturing of these, they will be gone. So that's why we are trying to reduce the import. Okay. So this is the concern here. Basic custom duty in पे बढ़ाया गया है. And there is a modified special incentive package scheme. So here the Ministry of Electronics and Information Technology has started this. What is this? So there's a subsidy for capital expenditure on photovoltaic cells and modules, 20% for investment in SEZ and 25% in non-SEZ. SEZ मतलब एक्सपोर्ट सेंट्रिक है, नॉन SEZ मतलब एक्सपोर्ट सेंट्रिक नहीं है। तो अगर आप इंडिया में ही बेचना चाहते हो तो ज्यादा सब्सिडी मिलेगी। कोई भी प्लांट आप लगाते हैं उस पर सरकार 25% सब्सिडी देगी, लाइक दिस। 1 करोड़ का प्लांट लगाओ, 25 लाख सरकार से सब्सिडी ले लो। बूस्टर डोज कॉर्बीवैक्स। So recently, the government of India announced that those who have received Covishield and Covaxin, first and second dose of COVID-19, can take Corbevax as a third booster shot. So अभी ये WHO के emergency use listing में नहीं आया है। Until now, the third dose had to be the same vaccine. अभी ये बोल रहे हैं नया स्टडी आया जी कि मिक्स करके लगाओ तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। So there's the heterologous COVID booster dose for individuals above 18 years. So that has been cleared. Okay. Now, this listing has been very much in news, emergency use listing. So this is a risk-based procedure for assessing and listing unlicensed vaccines, therapeutics, and in vitro diagnostics, with ultimate aim of expediting the availability of product to the people affected by a public health emergency. So that's where this emergency use listing comes into being. तो जब भी ट्रेवल करते हैं तो ये WHO फूड लिस्ट के हिसाब से देखते हैं। नेक्स्ट इज लांगिया वायरस। So amid the COVID-19 and monkeypox cases around, new zoonotic Langia henipavirus has raised some concerns. So this was first reported in 2019 and is of biosafety level 4 pathogen. कहने का मतलब as good as COVID-19. अब ये बायोसेफ्टी लेवल्स क्या होते हैं, ये प्रीलिम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वायरसेस तो आते जाते हैं। तो BSLs, so this is a way to identify the protective measures needed in a laboratory setting to protect the worker environment and public from a particular kind of viruses that they are dealing with. So the 4 biosafety levels are BSL 1 to 4, इसी तरह से 4 being the maximum level of containment. So BSL 4 में क्या आएगा? Exotic agents that pose high risk of aerosol transmitted laboratory infection and life-threatening diseases that is frequently fatal, for which there are no vaccines or treatments, जैसे कि Ebola, smallpox. ठीक है। BSL 3 COVID-19 इस कैटेगरी में आता है। SARS-CoV-2 is the general technical name for COVID-19. So these are indigenous or exotic microbes that
may cause serious or potentially lethal disease via inhalation. So tuberculosis, SARS-CoV-2, avian influenza, and plague. BSL-2, so there are microbes posing moderate potential hazard to personal and the environment. For example, herpes, simplex, common cold, and salmonella. BSL-1, these are not known to consistently cause disease in the immunocompetent adult human, of minimal potential hazard to laboratory personnel and other environment. For example, skin bacteria and yeast. So these are biosafety levels of various kinds. अब इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है? एक तो मैच द फॉलोइंग हो सकता है कि भाई ये वाली वायरस का बायोसेफ्टी लेवल कौन सा है. दिस वन. ठीक है, तो एग्जांपल के बेसिस पे अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना हुआ तो ऐसे बनेगा. देन इनका कंपैरिजन इनकी डेफिनेशन के बेसिस पे आ सकता है कि कितने ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग है, इनको अरेंज कीजिए लाइक दिस. दे कैन बी अ क्वेश्चन. तो बोथ वेज दिस कैन बी यूज्ड. ओके, लैंगिया वायरस, डोंट वरी मच, इसके बारे में कुछ नहीं हुआ. ठीक है, कोई ज्यादा न्यूज में नहीं आया है, उसके बाद एक बार ही आया था. देन अल्फा फोल्ड एंड प्रोटीन. So recently, DeepMind, a company based in London, announced that it had predicted three-dimensional structure of more than 200 million proteins using AlphaFold. What is AlphaFold? It is an artificial intelligence-based protein structure prediction tool. बस इतना ही चाहिए. So what is AlphaFold? It's an AI-based software. It's a protein structure prediction tool. कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होगा. बस उससे ज्यादा ये implications ये सब हमें टेंशन नहीं लेना है अभी. How should you benefit from it? It will help in building more vaccines, drugs, and so on. That's the benefit of it. Okay. Monkeypox. So WHO has declared global health emergency and sounded the highest alarm on the monkeypox virus. So ये भी एक टेंशन देने वाली चीज रही. 16,000 cases of once largely confined to Africa have been reported so far this year in 2022. अब क्वेश्चन यहाँ पे जो प्रीलिम्स में बनेगा वो इसमें बनेगा. What does declaring an emergency for global health mean? Declaring a global emergency means monkeypox outbreak is an extraordinary event that could spill over into more countries and requires a coordinated global response. Okay. The virus has spread to non-endemic countries, जहाँ पे वो पहले नहीं था. There are three criteria for declaring a public health emergency of international concern have been met as per WHO. तो ये प्रीलिम्स में चाहिए कि क्या क्या क्राइटेरिया होता है अगर किसी चीज को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर करना हो तो व्हाट ऑल क्राइटेरिया आर देयर. ऐसा एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है. पहला, एज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी इवेंट दैट इट कॉन्स्टिट्यूट्स ए पब्लिक हेल्थ रिस्क other states through international spread of diseases and that it potentially requires a coordinated international response. ये तीन चीजें आती हैं उसके अंदर. एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, पहले नहीं हुआ, constitutes a public health risk, and तीसरा requires a international coordinated response. So these are the three things. Okay. Then previously किस चीज को डिक्लेयर किया गया है public health emergency? There is COVID-19 pandemic, of course, 2014 Ebola outbreak, Zika virus in Latin America in 2016, and ongoing effort to eradicate polio. These are the previously declared public health emergencies by WHO. तो ये एक ही याद रखना, ये दो चीजों के ऊपर क्वेश्चन बन सकते. मंकी पॉक्स टेंशन नहीं लेना, उसमें कुछ नहीं आने वाला. मिस्ड सबमरीन केबल सिस्टम. This is Myanmar, India, Singapore transit. So Ministry of Environment, Forest and Climate Change recommended that missed submarine cable system for coastal regulation zone clearance, CRZ clearance. So this will be the 17th such optical fiber cable that to land in Mumbai and is expected to be ready for service in 2023. Essentially internet की cables under sea इसी तरह से चल रही हैं and this is the new one. इसमें participating countries का नाम याद रखना हमने बस. So it's like this. Cable system. Light mantled albatross. So the species native to Antarctica seas was recorded in Tamil Nadu. The location where the albatross was spotted is in the Pok Bay near the
Gulf of Mannar, an important bird area in the India's southeast coast. बस इतना ही है। अब इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। Deep sea mining, this is a critical area for us. So recently, Ministry of State for Science and Technology presented a National Science Award to Indian scientists who conducted the world's first locomotive trials of deep sea mining system in the central Indian Ocean. China is the country which is holding the monopoly in case of extraction of deep sea mining minerals or polymetallic nodules. तो हमारे भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में चाइनीज कंपनीज को हमने टिका दिया हुआ है ये निकालने के लिए। अभी हमारे पास अपने लोकोमोटिव्स की ट्रायल हो गई है, तो आगे जाके हम ये खुद कर पाए। ठीक है। सो it also inaugurated first of its kind state of the art fully automated buoy based coastal observation and water quality nowcasting system for Indian Ocean, which was developed by the INCOIS, that is Indian National Center for Ocean Information Service, part of India's deep ocean mission. Nowcasting किसको बोलते हैं? तो radar and satellite observation of local atmospheric condition are processed कि अभी किस तरह के हालात हैं वेदर को लेके, उसको बोलते हैं nowcasting. डीप सी माइनिंग का क्या हाल चाल है? कभी भी 200 मीटर से नीचे जब माइनिंग करते हैं तो उसको डीप सी माइनिंग बोलते हैं। एंड दिस इज रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी एंड एजेंसी अंडर द यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। दिस मॉनिटर्स ऑल द एक्टिविटीज व्हिच आर रिलेटेड टू मिनरल रिसोर्सेज इन द डीप सी। इस तरह के इसमें एफर्ट्स हैं। अभी देखिए तो इंडियन ओशन के एरिया के अंदर अगर देखा जाए तो ये पूरे एरिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश कर रही है। क्या क्या मिलता है? पॉलीमेटालिक नॉड्यूल्स हैं, कोबाल्ट रिच फेरोमैंगनीज क्रस्ट है और पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स है। ये 3 मेजर रिसोर्सेज हैं जिनकी डीप सी में माइनिंग होती है। इश्यूज क्या है? दे कैन डेफिनेटली हिट द बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम देयर, डिस्ट्रॉय डीप सी हैबिटेट्स। ओके, इंडियाज डीप सी मिशन क्या है? So deep ocean mission seeks to develop technologies required for exploring and then extracting minerals in the deep sea bed. So manned submersibles are being developed that can carry 3 people to the depth of 6,000 meters, and it has sensors and tools through which it can take up extraction also. It will pursue technology innovation for exploration and conservation of deep sea biodiversity through bioprospecting of deep sea flora and fauna on sustainable utilization of deep sea bioresources. So that's what we're trying to do. What are the other blue initiatives, blue economy initiatives? India-Norway Task Force on Blue Economy for Sustainable Development, Sagarmala, Smart, Integrated Coastal Zone Management and National Fishery Policy. ये सारी हमारी ब्लू रेवोल्यूशन का हिस्सा है, इनके बारे में बेसिक्स पता होने चाहिए। यहीं पे चाहे एक लाइन आप लिखिए अपनी तरफ से। James Webb Telescope's first image. So NASA is operating it. Yesterday also we studied about James Webb Telescope. So what is James Webb Telescope? ये अपने आप में ज़्यादा important है। So this is by NASA, European Space Agency and the Canadian Space Agency. 2021 में establish किया था। L2 Lagrange point हमने ये भी कल पढ़ लिया था। बस इतना ही, ये सबसे important information है इसके बारे में। And it's the largest, most powerful infrared telescope ever built right now. हबल को इसने रिप्लेस किया है एंड इट कैन लुक बैकवर्ड इन टाइम्स। ये सारी चीजें हमने कल भी वर्कआउट की थी इसके बारे में, यही बस ध्यान से पढ़नी। देन लैग्रांजे पॉइंट्स क्या होते हैं एक्सेट्रा, वो सब आप पढ़ चुके। निजी यात्रा। सो कंसल्टेटिव कमिटी मीटिंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली टू डिस्कस डिजी यात्रा। व्हाट इज डिजी यात्रा? So it's a project conceived to achieve contactless, seamless processing of passengers at the airport based upon facial recognition technology. So that is Digi Yatra. Yes. ठीक है. It will be decentralized mobile wallet-based identity management platform. It is cost-effective and addresses privacy data protection issues in the implementation of Digi Yatra. क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, भीड़ भाड़ पे हो जाती है जब सबके पेपर्स चेक करते हैं, सब करते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए डिजी यात्रा। अभी पीछे न्यूज में भी आ रहा था कि दिल्ली मुंबई एयरपोर्ट्स आर फ्लडेड विद पीपल ट्राइंग टू ट्रैवल। ओके, एंड फॉर दिस देयर इज अ फाउंडेशन व्हिच हैज बीन फॉर्म्ड
under Companies Act 2013 is called the Digi Foundation. Okay, and there is also something called as Digi Central Ecosystem, which it is trying to create. It will be a pan-India identity. कितने भी एयरपोर्ट्स होंगे सब में फिर इसी हिसाब से चलेगा. अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन किधर है? So in the first phase, this is being rolled out at 2 airports, Varanasi and Bengaluru. Later, Pune, Vijayawada, Kolkata, Delhi, Hyderabad सब में आ जाएगा. Already आ चुका है काफी एरियाज में. In 100% implementation में अभी टाइम लगेगा. ठीक है. Jagriti mascot. So recently, a mascot named Jagriti has been launched by Department of Consumer Affairs to empower consumers for further generating awareness of their rights. So consumer rights के लिए एक mascot है जागृति. Here you go. ठीक है, तो आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई तुम्हारे क्या राइट्स हैं एज अ कंज्यूमर, उनको देने के लिए. ओके, सो इट वुड हेल्प टू जनरेट कंज्यूमर अवेयरनेस अबाउट वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाइक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, हॉलमार्किंग, जैसे BIS हॉलमार्क को लेके एड्स आती रहती है टीवी में. नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1915, प्रोविजन ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट, डिसीजंस ऑफ द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, टेस्टिमोनियल बाय कंज्यूमर्स ऑन ग्रीवांस एड्रेसिंग. तो बस एक ये रीडिंग लेना है, छोड़ना है. ठीक है, अदरवाइज जागृति नाम याद रखना है. तो यहाँ पे मिक्सअप करने की कोशिश करेंगे. व्हाट इज द नेम ऑफ द मैस्कॉट which is for consumer awareness rights by Ministry or Department of the Consumer Affairs. तो जागृति, कामिनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा 4-5 नाम दे देंगे मिलते जुलते, फिर आपको याद रखना. ठीक है. डिक्लाइन इन इम्यूनाइजेशन कवरेज. तो कोविड-19 के चलते ना बहुत बच्चे जो हैं वो अपनी वैक्सीन टाइमली नहीं ले पाए, तो इसकी वजह से देयर हैज बीन अ लिटिल डिक्लाइन इन द इम्यूनाइजेशन कवरेज एंड दैट्स दैट. इसके बारे में बहुत ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है. तो ये मेंस का मामला है, प्रीलिम्स में ज्यादा मतलब नहीं है. देन NIIO सेमिनार स्वावलंबन. So basically, Prime Minister unveiled the sprint challenges during the Naval Innovation and Indigenization Organization seminar, Swarambat. What is sprint? Support pole vaulting in R&D through IDEX, NEO, and TDAC challenges is aimed to giving a boost to the usage of indigenous technology in Indian Navy. Finished. इतना ही चाहिए. Sprint challenge किसके साथ associated है? Boosting indigenous technology in Indian Navy. ठीक है. फिर नियो क्या है? इट इज नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन. ओके, ठीक है. अब बाकी के इसके साथ जुड़े हुए जितने फैक्ट्स हैं डिफेंस के साथ रिलेटेड, कि कब चल रहा है, क्या हो रहा है इसके अंदर, वो मीन्स का मामला ज्यादा है. ठीक है. व्हाट इज दिस TDAC एंड ऑल? सो विद इन द नियो देयर इज अ 3-tier ऑर्गेनाइजेशन. देयर इज अ नेवल टेक्नोलॉजी एक्सेलरेशन काउंसिल. Then there is of course working group under the NTAC, and then there is TDAC, that is Technology Development Acceleration Cell. 3 है. इनको भी मेंस में ज्यादा रिक्वायर्ड है, प्री में नहीं. अभी सिर्फ आपको प्री में इतना ही याद रखना है, प्रिंट क्या है और नियो क्या है. ठीक है. Then abort mission for Gaganyaan. So ISRO will conduct 2 unmanned abort missions in 2022 to ensure crew safety during Gaganyaan mission. So this is a part of ISRO's roadmap for the country's first manned flight to space, and the first test vehicle for this purpose is launched in September 2021. ये already हो चुका. So basically, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे अगर कभी अबॉर्ट मिशन करना पड़ जाए तो क्या करना चाहिए, तो उसके लिए ये वर्कआउट है. ठीक है. गगनयान किस लिए जा रहा है? इट इज फॉर द मैन्ड क्रू स्पेस फ्लाइट. सो उसके लिए दिस इज बीइंग डेवलप्ड बाय इंडिया. Synthetic biology. So, as per the study by USA, due to climate change, 1/3 of all animals and plant species on the planet could face extinction by 2070. And for this, environmentalists consider synthetic biology or SynBio the potential tool to preserve biodiversity and restore the natural ecosystem. Now, what is this synthetic biology? This was first used by Barbara Huberman, 1980, to describe bacteria that have been genetically engineered using recombinant DNA technology, जैसे Bacillus thuringiensis, BT. Okay. So synthetic biology refers to science of using genetic sequencing, editing, modification to create unnatural organisms or organic molecules that can function in living systems.
So you can design a DNA in an organism as per your requirement. That is synthetic biology. बस इतना चाहिए prelims में. ठीक है. आज यहाँ तक करेंगे. कल यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे increasing efficacy of antibiotics. Okay. So that's that for today. Thank you. Any doubts so far? So you may please ask. No, sir.